आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल के बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, हम पाकिस्तान की तारीख कबूल नहीं सकते। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली होती है। एक जनरल ने यह शक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है? हम अपनी मर्जी से जो फैसला करना चाहें कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? पाकिस्तान के पार्लियामान का जो इम्तिहान है, क्या वो दुनिया के किसी पार्लियामान का है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवालात उठाए गए। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। इस केस में इनफरादी लोगों के मुकदमात नहीं सुनेंगे। इनफरादी लोगों के इलेक्शन मामलात आइंदा हफ्ते सुनेंगे। हो सकता है तब तक हमारा इस केस में ऑर्डर भी आ चुका हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। Permanent and past and closed transaction, applying the principles of res judicata, will not issue a declaration that this declaration no longer applies to this person. Is that it? Anything else? My lord, that is it. And just one more question. Is there any material which sort of talks about the importance of elections in the sense that people convicted or people having decrees against it, there's this cooling off period and after which they can jump into the ring again? I mean, conceptual framework of this, any material, anything that elections require, that even if you were a convict after a cooling off period, you're still, I mean, democracy requires that you come back into the ring again. My lord, history gives you that example, which I gave your lordship 2 examples very recently, that history gives you that example. Besides history, I haven't come across, but I look for it. My lord, my last submission was, and that's the formulation, that it was submitted yesterday by one of the amici, that your lordships will make this judgment, he didn't say that in so many words, prospective, and it will apply only now to the current election disputes, but it will not do anything about people who had earlier been disqualified as a result of Samiullah Baloch or earlier case law. The submission over there would be that if your lordship was to go down that road, your lordships will be creating 2 classes of citizens in the country, those in whose case a declaration has been made earlier and they have been stripped of their fundamental rights, and those whose fundamental rights are threatened now. एक चीज मखदूम साहब इसी से रिलेटेड जो सवालात हो रहे हैं जी, जो समीउल्लाह के केस में आया है वो ये आया है कि जब तक वो डिक्लेरेशन कायम और दायम रहेगा, जब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। अब ये जो नया लॉ 232 में आया है, कैन वी रीड इट लाइक दिस कि ये जो वो वाली बात थी वो उन्होंने परमानेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज द डिक्लेरेशन विल रिमेन इन फील्ड। हम ये कह सकते हैं कि इस लॉ के आने के बाद उस डिक्लेरेशन की मुद्दत उन्होंने 5 साल कर दी। सिर्फ इलेक्शंस? Yes, my lord, your lordship to the may, extent of election. Your lordship may, but my respectful submission remains. My respectful submission remains that I your see lordship. you are very hesitant to go that path. My lord, I spent several days unsuccessfully arguing in another case, so I'm in a way, I have got a mental block saying that a statute, my lord, your lordship's judgments are there. Your lordship will find every reason to uphold the validity of a statute. Even only when reasoning completely fails your lordship, would your lordship strike it down. When there are 2 interpretations possible, your lordship will give an interpretation. The burden of proving a statute unconstitutional is upon the person who comes to this honorable court and says this statute is unconstitutional. Now, in order to apply those, now even if your lordship is to uphold the statute, It was just a comment. No, my lord, Carry on with your. No, but one more question which arises from that is that there's a bit of an unease when we look at 232. Can, through sub-constitutional legislation,
the constitutional provision be controlled? I just want your comment. My lord, my submission is two. Maybe we have just considered this very point in the Supreme Court Practice and Procedure Yes, Your Act, Lordship. which was a full court where the right of appeal was created by Yes, statute, not by the Constitution. Is that an answer or not an answer? My lord, that's one answer, and your lordship gives another answer in that case as well, where your lordship That judgment is binding on us. that and your lordship says that we will not deal with academic questions. Questions which do not arise, we will not decide in this case. Number of issues were raised. Your lordships in the penultimate paragraph, practice and procedure judgment. Yeah, it was very interesting hearing. It was, Your Lordship- we would have loved to, but like you my lord, said it, save it for another day. Yes, my lord, and I would therefore say, my lord, Can you also just, I know it may be imposed, give a little write-up today? my lord, a write-up Not is too long, ready. just precise Yes, what ma'am. you And may formulated, I just- so we don't want to miss anything out. Before leaving the rostrum, He has the right to. You are a mind reader. my lord, Have you done it already? That note is there. Your lordship may also take a look at this chart, and then I leave the rostrum. Paragraph 34 of your lordship's judgment, full court judgment, having found the act to be fully compliant with the constitution, there is no need to consider the other points raised by the petitioners because the same will have no bearing on the outcome of these cases. So a declaration as to 232 will have no bearing on the outcome of these 185 appeals. If your lordship overrules Samiullah Baloch, the disqualification We will get celebrate. removed. If your lordship confirms Samiullah Baloch, the disqualification is then upheld. Bring your business online with GoDaddy. Get all the help and tools you need to succeed. Join the millions of small businesses that trust GoDaddy and get online in minutes. Visit GoDaddy.com today. उसको वो कहते हैं कि डिक्लेरेशन की जो मुद्दत है जो उसमें लिखी हुई है उस 62F के अंदर वो हम 5 साल कर रहे हैं तो वो अभी आप रेफरेंस देना हमने इस्लाम को दरमियान में लाया मैंने कहा काई साहब ने ये बातें काई साहब ने जिस तनाजर में की है वो कोई और तनाजर है मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भट्टी साहब की इतनी दिल पजीर सुनने के बाद और अगर काई साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है जो सुप्रीम कोर्ट का कोई बंदा उनको मामला जाने चाह रहा है तो यकीनन के बयान ले ले यकीनन कोई रहनुमाई होगी कल जज अदालत में जिस खूबसूरती से रिपोर्ट कार्ड में बैठ के आज सारे कोर्ट का बताया कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं बल्कि जो अल्फाज इनके वो तो मैं नहीं सुना सकता हूँ मैंने तो उनके बारे में नहीं दुहराया था जिन्हें अदालतों का मजाक उड़ाते रहते 1916 से 2016 से लेके आज तक आओ बच्चे आओ तुम्हारी तहकीक करने का नाम के ऊपर और फिर क्या क्या उनको जो हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी व्हाट्सएप कॉल छोड़ो मारो बोली क्या मुकदमे चले मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब इस सदाओं वाले मुकदमे का जिक्र करते हुए भाई शर्म आनी तीन कामरान जी सर ऑन ए फेयर नोट नहीं मैं आप भट्टी साहब को क्यों इनको नहीं कह रहा मैं हमें सबको कह रहा हूँ अजीब वाली मेरी इज्जत करता है उसमें दिल से मेरी इज्जत करता है कि वोट ना खत्म करे ये लड़ाई का नहीं आप एक ग्रुप के लोग हैं मैंने क्यों लड़ाना भाई नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब की इखलाकी साख भी बहाल कर सकेगी जिस तरह के हमले हो रहे हैं भट्टी साहब और दूसरे क्रिटिक सोशल मीडिया पे और दूसरे अवाम भी करती है क्या वो करप्शन का दाग धुल सकेगा इवन उनकी ताहियात नाहली भी खत्म हो जाए वो हाई मॉरल ग्राउंड दोबारा ले सकेंगे मियां साहब इन करप्शन केसेस से पहले से क्या सुप्रीम कोर्ट धो पाएगी या कोई भी फैसला अगर हमारे जो है जो दलील है उसकी बुनियाद जो साइटेशन हम दे रहे हैं वो है तो वाटरगेट स्कैंडल को ना चोरी का था ना झूठ का और निक्सन ने भी नहीं किया वो तो उसके स्टाफ के ऊपर एक इल्जाम था कि जो उन्होंने डेमोक्रेट्स का जो ऑफिस है उसको हाईजैक किया उसके अंदर जाके कुछ चीजें जो है हाईजैक किया और सारा ठीक है फिर उसके बाद निक्सन का कोई मुआवजा नहीं हुआ वो नाहल नहीं हुआ रिजाइन कर दिया क्लिंटन का जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ ये आप पॉइंट्स अगर जो आपके आर्टिकुलेट अगर एक छोटा सा 1-2 पेज पे अगर आप हमें दे दें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे Sir, it will be done today. एक जरा सी फैक्चुअल बात भी है सवाल पूछ रहा हूँ क्या जितने भी जजमेंट्स आई हैं जिसमें समीउल्लाह बलोच को इम्प्लीमेंट किया इवन समीउल्लाह बलोच में ही क्या किसी भी केस में किसी सिविल कोर्ट से ऐसी डिक्लेरेशन आई है कि जिसके तहत उस शख्स को डिक्लेयर कर दिया हो कि वो नहीं और उसकी बुनियाद पर उसको लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन आरओ ने किया No, man. Not that I am aware of. Just adding